अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। ये तो फिर से चमकने लगा। देखिए सुकी, मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका देगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। नोबिता, थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते। चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता, कोई भी मुझे नहीं समझता। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो। नोबिता रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। अब इसे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? ये तो स्प्रिंग के कदम है। कैंडी हाउस के अंदर हमारी क्रिसमस पार्टी। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी। और बटर और शक्कर। और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक। कुकीज, वेफर्स। छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरी चिरी का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा इससे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरी चिरी से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये क्या? ये लो।
बनाते हैं। ठीक है, अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। हाँ? कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। बाजू हो जाओ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये डोरेमोन भी, ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको, 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 रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ, आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ?
The first thing Elias noticed about the house was the sound. Not creaking floors or whistling wind, those were expected. It was the breathing, slow, patient, as if the walls themselves were alive and waiting for him to fall asleep. The realtor had laughed when he mentioned it. "Old houses make old noises," she'd said, already halfway down the porch steps. "You'll get used to it." Elias didn't correct her. He didn't tell her that the breathing had stopped the moment she stepped outside. He moved in that same evening, hauling boxes into rooms that smelled faintly of damp wood and something sour beneath it. The house sat alone at the edge of Blackthorn Road, where streetlights thinned and the forest pressed close, like it was trying to listen. Elias liked that. Silence helped him think. Silence helped him forget. By midnight, the boxes were still unopened, stacked like gravestones around the living room. Elias lay on the bare mattress upstairs, staring at the ceiling. The breathing had returned. In, out, in, out. It didn't come from one place. It came from everywhere. He told himself it was the wind slipping through cracks, the house settling, his imagination sharpening in the dark. He closed his eyes. That's when he felt the mattress dip, just slightly, as if someone had sat at the edge of the bed. Elias snapped upright, heart hammering. The room was empty. Moonlight spilled across the floor, revealing nothing but dust and old floorboards. The breathing continued, closer now, warmer. "Hello?" he whispered, hating the tremor in his voice. The breathing stopped. Silence flooded the room so suddenly his ears rang. Then a voice spoke, not aloud but inside his head, pressing against his thoughts like a cold hand. "You hear it too." Elias staggered out of bed, backing toward the door. "Who's there?" The voice didn't answer. Instead, the house sighed, deep, satisfied. He didn't sleep that night. The next morning, Elias found marks on the walls, thin grooves, carved deep into the wood, spiraling outward from the bedroom like fingerprints dragged by something with too many joints. He touched them. The wood was warm. He called the realtor, straight to voicemail. He called the previous owner, disconnected. By noon, his phone had no signal at all. The forest outside seemed closer than before. Trees leaned inward, their branches tangled like clasped hands. When the wind blew, they rustled in a way that almost sounded like whispering. That evening, as the sun sank and shadows stretched unnaturally long, Elias heard footsteps upstairs. Slow, careful, bare. He stood at the bottom of the stairs, gripping a kitchen knife, telling himself not to look up. The steps paused. Then something began to descend. Not walking, sliding. A wet sound followed each movement, like skin dragging across wood. Elias raised the knife just as a shape emerged from the darkness. It looked almost human. Almost. Its limbs were too long, bending the wrong way. Its face was a blurred smear, like a memory rubbed too many times. Where eyes should have been, there were shallow hollows, leaking black fluid that dripped onto the steps. When it breathed, the house breathed with it. "You don't belong here," Elias said, though he had no idea why. The thing tilted its head. The voice returned, stronger now. "Neither do you." The lights flickered, the walls pulsed, the grooves in the wood began to move, crawling like veins. Elias ran. Doors slammed shut as he passed, locking themselves. The hallway stretched impossibly long, wallpaper peeling back to reveal something dark and fleshy beneath.
hands pressed out from inside the walls, fingers writhing, leaving bulges that followed him as he ran. At the front door, he yanked the handle. It wouldn't budge. The breathing was deafening now. "You fed it," the voice said. "Every night you remembered. Every night you tried to forget." Elias collapsed to his knees. Memories surged. His brother's face, pale under hospital lights, the flatline tone, the decision to pull the plug, the guilt he had carried, heavy and rotting. "I didn't mean to," Elias sobbed. The thing slid closer. Its shape softened, changing. Its blurred face sharpened into something familiar. Too familiar. His brother smiled at him, lips splitting wider than they should. "You needed a place to hide," it whispered. "So did we." The house exhaled. The walls closed in. The outside, Blackthorn Road, remained quiet. No one noticed when the house settled a little deeper into the earth, satisfied at last. Sometimes, late at night, drivers swear they hear breathing as they pass. Slow, patient, waiting.